Today we are going to discuss addressing modes and instruction set of 8086 microprocessor. Now, first of all, what is addressing mode? So far, we discuss a hardware section. We have already finished. We started with in last week. Rather, we started with overview of 8086 microprocessor. Prior to that, we studied what is computer, what is microcomputer, what is microprocessor, how the microprocessor evolve. That is what the evolution of microprocessor is all about. Then we have gone through the pinout diagram of 8086 microprocessor, and in last lecture we have discussed uh, internal architecture. It means we started from hardware, and we have discussed. We started talking about now software section, right? So hardware part is already over now. Now this is going to be a software part, addressing mode and instruction set. Particularly today we will be focusing on addressing mode. Instruction set we will be discussing more in next lecture. But during addressing mode, we will be discussing some of the instructions as well, because addressing modes cannot be discussed without quoting example of instruction. Now, what is addressing mode? Uh, uh, Let me tell you. First of all, let me show you this program. This is the example of 8086 microprocessor program. Okay. Now, what this all about? This is basically a program. You can see here, this red rectangle is basically a program. What is program? Program is a set of instruction written to solve a particular task. Okay. So whenever we are writing set of instruction, resolve or to solve a particular task or particular problem, that set of instruction is nothing but program. I mean, this is a very general definition of program. This has nothing to do with machine language program. This is, I mean, true with any language program. But this, whatever the example we have quoted here, this is a typical example of machine assembly language program. Okay. Now, what this assembly language is all about, that we will discuss in due course of time. What is the format, and then like how these all those instructions, that we will discuss in detail. First of all, right now you just understand what the program is all about. So program is a set of instruction written to solve a particular problem. That is nothing but program. Now if you look at this particular section out of rectangle, you can see semicolon followed by some comment. Semicolon followed by some comment. This is, I mean, comment means this is a short illustration of what this instruction is all about. This is short illustration of what this instruction is all about. You can see here, like this is data segment. Now in front of data segment, you can see the assembler directive. It means this is one of the assembler directive. Now what is assembler directive? That I will tell you later. Don't get confused right now. Okay. Similarly, ORG 1104H, this is also assembler directive. This is also assembler directive, and so on and so forth. But look at this, MOVAX, 2055AH. What is this? This is load the first data byte in AX registers. It means this AX register is going to be loaded with this particular data. This is the meaning. It means whatever we have in front of this particular semicolon, this is basically the instruction comment, or the meaning of that instruction, or a short illustration of this instruction. Okay. We will discuss this in detail, because right now you need not worry about this, like what this I mean the statement is and what this instruction is all about. First of all, right now you just understand what the program is. So program is a set of instructions written to solve a problem. This is what the program is. Okay. Now what is instruction? This is a particular example of instruction. You can see here, this a small rectangle, MOVAX, 205AH. There are many instructions, but this is one of the instructions. So what is instruction? Instruction is directions which a microprocessor follows to execute a task or a part of task. It means instruction gives a direction. जैसे कि I told you earlier, like I told you to go to the
go to the HOD room and bring something. Okay, let us say I started teaching and I forgot to bring a duster. Okay, so I will ask you to go to the office and bring duster. So this is instruction. What this instruction is all about? This is a direction which a microprocessor follows to execute a task. So whenever because as far as this particular instruction is concerned, this definition is all right, or absolutely all right, right? So this instruction is directions which a microprocessor to follow, microprocessor follows to execute a task. Okay, वैसे अगर मैंने आपको बताया, जैसे मैंने कोड किया, मैंने अगर कहा कि बेटा जाओ और ऑफिस से डस्टर लेकर आओ, so what this instruction would be is that instruction would be directions which the student is going to follow to execute a task. So what was task क्या था? Task आपके सामने ये था कि ऑफिस से डस्टर लाना. Instruction क्या था? कि जाओ बेटा लेकर आओ. So that was instruction. What is that instruction? That is a direction which the student is going to follow as we execute a task. Okay, or part of task. Okay, I hope you understood the meaning of instruction. If you don't understand, you can keep on writing questions and you can ask those questions in the last session as usually we do every day. Then computer language. What is computer language? In fact, there are two different kind of computer languages. One is high level language, other is low level language. Now, what is high level and what is low level? It all depends on the machine. It all depends on the machine. For example, if your mother tongue is Marathi, then English would be your high level language and Marathi would be a low level language. Why? Because the reason is you will be able to understand each and everything in Marathi, but you are not going to understand each and everything in English. Okay, or I can quote another example. Let us say you are Indian and Indians, and that too Maharashtrian, right? So being a Maharashtrian, you know how to speak in Marathi. Being an Indian, you know how to, you will be able to understand Hindi because Hindi being a national language, and you know English because this is a medium of instruction in India. In most of the higher education institutions, English is higher level languages. So all these three languages, although of course you will have a little bit hierarchy of those languages also, क्योंकि अगर आपको मैं कहूँ कि बेटा आप तीनों लैंग्वेज में which language would you prefer, obviously most of you would prefer your mother tongue. Okay, next would be your national language, and third would be your international language, because English being an international language. But since in India most of the higher education institution follows medium of instruction English, everybody, I mean those who are studying in HEIs, they know all these three languages. One is regional, that is mother tongue, second is national, and third one is the medium of instruction, which is English language, right? Now if I ask you, if I started speaking in just now, right, I am speaking in English, you are able to understand. अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ तो भी आपको समझ में आएगा, and मैं मराठी में बात करता हूँ तो भी आपको समझ में आएगा, right? But if I start speaking in Japanese, you will not be able to understand, right? So for you, Japanese is going to be high level language, and Marathi, Hindi, English is going to be low level language. And if you really want to understand Japanese, what you need converter. You need converter in between, so that we call it as a translator, right? So that Japanese language can be converted to your own language, either Hindi, English, or Marathi. Similarly, if you go to Japan, Japanese is going to be their low level language, right? Japanese is going to be their low level language, and Hindi is going to be high level language for them. If you start speaking in Hindi, English to some extent they will be able to understand because English is international language, but Hindi being an Indian language, Indian national language, if you start speaking there in Hindi, तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे. तो what do you need? If you really want to speak in English, जैसे कि हमारी इंडियन प्राइम मिनिस्टर बहुत बार जब फॉरेन जाते हैं तो they always prefer to speak in Hindi. Okay, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार जब चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जापानीज प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो there is always a translator in between, sitting in between. वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर जापानीज में बात करते हैं, एंड द ट्रांसलेटर क्या करता है, वो जापानीज का कन्वर्शन हिंदी में करता है, and then our prime minister speak in Hindi and the translator translate that Hindi into Japanese. So for us, Japanese is going to be high level language, but Hindi, Marathi, English is going to be low level language. But however, on the other hand, for Japanese is going to their low level language, and Hindi going to be
high level language. So this low level language and high level language depends on machine. Okay. Accordingly, in computer also there are two languages. One is high level, another is low level. Now, what is in terms of computer? What is low level and high level? The language which can be understood by the machine, called as low level language. जैसे कि हमने कहा ना, language which can be understood by us is going to be low level language. जो हम नहीं समझ सकते, that is going to be high level language for us. Similarly, for machine also, language which can be understood by machine, and machine की कौन सी language समझ में आएगा machine को? Obviously, in terms of zeros and ones. जैसे मैंने आपको बताया, machine being a digital device. Machine I'm talking about computer machine. Okay, computer machine being a digital device, and digital electronics understand only zeros and ones, right? Binary, right? So language which consisting of zeros and ones is always referred as low level language. Whereas high level language means the language which is not in the form of zeros and ones. Language which is not in the form of zeros and ones. तो वो कौन सी language है फिर? जैसे कि आपको पता होगा C, okay, Pascal, Fortran, Basic, these are high level languages. So if you, but still आपको पता होगा कि हम high level language भी कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं. The reason is we have a translator. हम वहाँ पर compiler कहते हैं. Because the program which convert high level language into low level language is called as compiler. Okay. So language, as far as languages are concerned, there are two languages, high level and low level. I hope you understood what I mean to say. As far as low level language is concerned, low level language is still further divided into two: machine language and assembly language. Low level language is still further divided into two: machine language and assembly language. What does assembly language means? Assembly language means it is always in the form of code. It is always in the form of code. You can see this is the example of machine language code. MOV AX205AH. ये जो red rectangle है ना, यहाँ पर देखिए. This is basically one of the example of assembly language. MOV AX205AH. So instruction is MOV AX. क्या zeros and ones में है क्या? नहीं, ये तो code में है, right? This is what you call as assembly code. This is what you call as assembly code. Now, why this is low level language? Because it varies from machine to machine. It varies from machine to machine. Machine to machine means it varies from processor to processor. We are talking about today. We are talking about 8086 microprocessor machine language, right? So these instructions are 8086 instructions. 8085 will have different instructions. 80286, 186, 386, those higher microprocessors will have different language, right? So these assembly languages are machine dependent. Machine dependent means हर microprocessor का अपना assembly language है. Okay, so assembly language always in the form of code. अब ये microprocessor को समझ में आएगा कि नहीं, ये भी नहीं समझ में आएगा. क्या लगेगा हमें? यहाँ पर भी converter लगेगा. वो converter को हम assembler कहते हैं. जैसे कि high level language के example मैंने बताया आपको, बेसिक है, फोर्ट्रॉन है, सी है, पास्कल है. दीज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस. अगर आपको पता होगा तो वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस है, दीज इंस्ट्रक्शंस आर जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज. इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर देयर इन बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन, सी, दीज इंस्ट्रक्शंस आर जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज. लेकिन वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जो इंग्लिश के कोड्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें जो प्रोग्राम लगता है उसको हम कंपाइलर कहते हैं, राइट? यहाँ पर जो है असेंबली लैंग्वेज में इट्स लाइक मोर कोडेड वर्जन. बहुत मतलब यूजर फ्रेंडली इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं है. दिस इज अ काइंड ऑफ कोडेड वर्जन ऑफ असेंबली लाइक लैंग्वेज, एंड उसको इसलिए हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं. एंड बट स्टिल दिस इज नॉट, आई मीन ऑब्वियसली दिस इज लिटिल बिट लोअर देन हाई लेवल लैंग्वेज, बट स्टिल नॉट कैनॉट बी अंडरस्टूड बाय द प्रोसेसर. इसलिए यहाँ पर फिर से हमें कन्वर्टर लगेगा. उस कन्वर्टर को हम कहते हैं असेंबलर. ओके, सो असेंबलर विल कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. एंड द अनदर लैंग्वेज इज मशीन लैंग्वेज व्हिच इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones, which is always in the form of zeros and ones. असेंबली लैंग्वेज, सो कैसे उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? हाई लेवल लैंग्वेज अगर यहाँ है तो लो लेवल लैंग्वेज यहाँ है, और लो लेवल लैंग्वेज की फिर दो पार्ट है, असेंबली और मशीन. So you essentially high level language, assembly language and machine language. So assembly language stands in between. ये neither it is like high level language nor it is like a low level language. मतलब nor it is like a zeros and ones. Okay, तो मतलब ये high level language से थोड़ा complicated है, लेकिन फिर भी microprocessor को नहीं, easy microprocessor के लिए easy है. Okay, microprocessor के लिए, लेकिन फिर भी नहीं समझता, इसलिए उसको क्या चाहिए?
assembler चाहिए. So this is how the structure microprocessor languages can be classified. Computer language, the computer languages can be classified. Overall, computer language can be divided into two: high-level language and low-level language. And low-level language can further be divided into machine language and assembly language. As I mentioned earlier, machine language is always in the form of binary bits. Okay, यहाँ पर उसका example नहीं है, लेकिन I will give you some example in due course of time. Whereas assembly language is always English alphabets. You can see here MOVAX. This is English alphabet. We call it as a mnemonics. This kind of instruction is called as mnemonics in assembly language. And we require assembly language assembler to convert these mnemonics into machine language. Okay, without assembler, we cannot. Microprocessor will not be able to understand. Okay, this is all about the languages and what is program and what is instruction. Now first, let us see what is the addressing mode. Now addressing mode, as far as addressing mode is concerned, there are some facts. Every instruction of a program has to operate on the data. Okay, every instruction of a program has to operate on data. Like for example, you can see MOVAX 205AH. इसका मतलब क्या होता है? ये देखिए रेक्टेंगल में जो है ना, वो देखिए वहां पर फोकस करिए आप. क्या है ये? MOVAX 205AH. उसका मीनिंग ये है कि लोड दिस रजिस्टर AX with 2058. ये जो डेटा है, ये डेटा इज गोइंग टू लोडेड इनटू AX. इसका मतलब क्या है? Instruction always operate on data. Instruction always operate on data. And this is why this statement is every instruction of a program has to operate on data. The different ways in which the source operand is denoted in an instruction are known as addressing mode. Okay, the different ways in which the source operand is denoted. Source operand मतलब क्या है? Source operand क्या? This is what you call as operand. ये 205A है ना, ये instruction में MOVAX 205A, ये जो 205A डेटा है, we call it as a source operand. Okay, तो अभी क्या स्टेटमेंट ये है? स्टेटमेंट ये है कि the different ways in which the source operand is denoted in an instruction are known as addressing mode. अब थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट है ना, तो I am going to simplify it. The different ways. What is basically addressing mode? The methods or techniques which are being used to provide data and memory, to execute the instruction is nothing but addressing mode. Let me repeat again. The method or technique which is being provided, method or technique which is being used to provide data or memory to execute instruction is called as addressing mode. Okay, अब देखिए फिर से मैं इसको बाइसेक्ट करता हूँ. राइट, मैंने क्या बताया कि इट इज ए मेथड और टेक्निक. दिस इज मेथड और टेक्निक, मतलब ये एक टेक्निक है या मेथड है किसका? फॉर प्रोवाइडिंग डेटा और मेमोरी. क्योंकि डेटा और मेमोरी क्यों, अब आपको बताता हूँ फिर से. डेटा क्या है? ये डेटा, क्योंकि देखिए अब ये MOVAX 205AH इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट करना है तो मुझे क्या चाहिए? ये डेटा देना पड़ेगा. ओके, ये डेटा देना पड़ेगा. So it means if I want this instruction to be executed, I need to provide this data. डेटा देने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं. सिमिलरली ये जो इंस्ट्रक्शन है MOVAX 205A, ये किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, क्योंकि ये माइक्रोप्रोसेसर के अंदर नहीं रहता. पहले जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम ऑलवेज are going to keep this program in the RAM memory of the microprocessor development system or computer, we can say. It's outside the processor. Okay, and वहां से हमें क्या करना पड़ता है? एक एक इंस्ट्रक्शन जो है माइक्रोप्रोसेसर में भेजनी पड़ेगी. जैसे मैंने बताया था कि फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन. सो फेचिंग मतलब क्या है? Each and every instruction, transfer of instruction from memory to microprocessor is called as fetching. Transfer of instruction from memory to microprocessor is called as fetching. Okay,
तो फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स जब इंस्ट्रक्शन माइक्रो मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर में जाएगा तो हम कहते हैं फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। फेचिंग ऑफ डेटा मतलब जब डेटा मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर में जाएगा। तो whenever we are talking about instruction और डेटा, वो किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा ना। कौन सी मेमोरी लोकेशन पे? जो मेमोरी 8086 माइक्रोप्रोसेसर को अटैच्ड है, राइट? जो मेमोरी 8086 माइक्रोप्रोसेसर को अटैच्ड है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मुझे यामोवी AX205A इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट करना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे इसका मेमोरी लोकेशन भी देना पड़ेगा कि ये कहां पर है, तब तो माइक्रोप्रोसेसर जाके वो इंस्ट्रक्शन लेगा ना, राइट? तो मुझे मेमोरी प्रोग्राम का मेमोरी देना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन का, एंड वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए डेटा चाहिए, वो डेटा भी देना पड़ेगा, राइट? तो ये दोनों बातें मतलब मेमोरी एंड द डेटा, ये देने के कुछ तरीके हैं, देने के कुछ टेक्निक्स है। Those techniques are nothing but the addressing modes. So let me repeat again. What is addressing mode? The method or technique which is being used to provide the data or memory location to execute instruction is nothing but is addressing mode. मतलब जितने भी टेक्निक्स है, जितने भी मेथड्स है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट मतलब प्रोग्राम को मतलब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमें मेमोरी देनी है एंड मेमोरी लोकेशन आई मीन टू से एंड डेटा देना है, वो देने के जो तरीके हैं वो तरीकों को हम एड्रेसिंग मोड कहते हैं, राइट? दिस इज व्हाट द एड्रेसिंग मोड इज. So let me repeat again. The method or technique which is being used to provide data as well as memory location for the execution of instruction is called as addressing mode. Okay, so this is the simpler definition of addressing mode. Now there are 12 different addressing modes. As far as 8086 microprocessor is concerned, there are 12 different addressing mode. आपने अगर 8085 माइक्रोप्रोसेसर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 8085 microprocessor is having lesser number of addressing mode. The reason is 8085 microprocessor is lower version. This is advanced version. 8086 is advanced version of 8085 microprocessor. So there are 12 different modes, and we are going to discuss each and every mode one by one by giving some examples. Now all these 12 different addressing modes has been grouped into different categories. Group 1, these first two has been grouped into one first group, addressing modes for register and immediate data. Okay, this is one group which is called as addressing modes for register and immediate data. You can see register addressing and immediate addressing. Then this take 1, 2, 3, 4, 5, 6. This 6 direct addressing, register indirect addressing, base addressing, index addressing, base index addressing, and string addressing. These 6 instructions are labeled into group 2. We call it as a addressing modes for memory data. Addressing modes for memory data. And next group 3rd is addressing modes for IO ports. Direct IO port addressing, indirect IO port addressing. This is group 3rd, addressing mode for IO port. And group 4 is relative addressing mode, and group 5th is implied addressing mode. So what does it mean? It means that there are 5 different groups. There are 5 different groups. In fact, there are 12 different addressing modes. What are those? Register addressing mode, immediate addressing, direct addressing, register indirect addressing, base addressing, index addressing, base index addressing, string addressing, direct IO port addressing, indirect IO port addressing, relative addressing, and implied addressing. These are 12 different addressing modes. Those 12 different addressing modes has been categorized into 5 different modes, groups, right? First group consisting of addressing mode for register and immediate data. Group 2 consisting of addressing mode for memory. Group 3 having addressing modes for IO ports. Group 4 is relative addressing, and group 5th is implied addressing. I'm going to tell you, we will discuss one by one in detail. Let us start with register addressing. Okay, what is register addressing? The instruction will specify name of the register which hold the data to be operated by the instruction. Okay,
I mean, what does it mean? Why register addressing? Because ये जो data जो लगने वाला है execution के लिए, that data is available in the register only. You can see, this is one example. MOVCL, DH. MOVCL, DH. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, content of DH will transfer to CL. मतलब DH का जो डेटा है, both are, you know, we have gone through the internal architecture of microprocessor. आपको पता है internal architecture में क्या है? There are 4 16-bit register, AX, BX, CX, DX, and there are 8 8-bit registers, right? HAL, BHBL, CSCL, and DHDL, right? These are 2 8-bit register, CL and DH. MOV CL, DH. This is one of the data transfer instruction. अब ये instruction का detail हम बाद में समझेंगे. I'm going to tell you details of this instruction. But here we are referring this instruction to understand what is register address. Okay. So क्या हो रहा है यहाँ पर? MOV CL, DH का मतलब क्या होता है? DH का content CL में जाएगा. Whenever this instruction will be executed, the content of DH will transfer to CL. So why it is content of 8-bit register? Because these are 8-bit register. By default हमने देखा है internal architecture में कि DH और CL both are 8-bit register, right? अब इसको register addressing क्यों कहते हैं? रीजन ये है कि यहाँ पर जो डेटा, ये इंस्ट्रक्शन, जैसे पहले मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन हैज टू ऑपरेट ऑन डेटा, राइट? तो जो डेटा हम यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते समय जो डेटा हमें लग रहा है, वो डेटा कहाँ पर है? दोनों रजिस्टर में है, DH और CL में. मतलब DH में है जो हमें CL में ट्रांसफर करना है. It means during execution of this instruction, both registers are going to be involved, right? Both registers are going to be involved. ये देखिए, ये इसका आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताया गया है. 4 हमारे पास 16-bit registers हैं. Kindly, I would request all students to unmute mute their mic. Okay. So there are 4 registers: AX, BX, CX, and DX, and you can see each of those are split into 2: AH and AL, BH and BL, CH and CL, DH and DL. जैसे मैंने बताया, right? तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो DH ये यहाँ पर है, ये DH का कंटेंट कहाँ ट्रांसफर होगा? CL में होगा. मतलब डेटा कहाँ पर है? रजिस्टर में है. इसलिए दिस इज एग्जांपल ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. ओके, नेक्स्ट. Now this is immediate addressing. Now why this is immediate addressing? आप देखिए, in immediate addressing mode, 8-bit or 16-bit data is specified as a part of instruction. अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, MOV DL, 08H. अब यहाँ पर what is different? पहले एग्जाम्पल क्या था? देखिए MOV CL, DH. यहाँ पर दोनों रजिस्टर है, राइट? यहाँ पर एक रजिस्टर है और दूसरा एक्चुअल डेटा है, इमीडिएट डेटा है. मतलब इमीडिएट क्यों? कि ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन मतलब ये जो रजिस्टर है, डेस्टिनेशन रजिस्टर, इसके immediately after this destination register you will have data, and that is why it is called as immediate addressing. Okay, so 8-bit data 0 to 08H given in instruction is transferred to register DL. अब देखिए यहाँ पर ये एक्शन देखिए, 08 कहाँ जाएगा? DL में जाएगा. ओके, दूसरा एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल क्या है? ये 8-bit रजिस्टर का एग्जांपल है. दिस इज 16-bit रजिस्टर, MOV AX 0A9FH. आप देखिए यहाँ पर ये, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर 8-bit है, इसीलिए आपका डेटा भी 8-bit है, 08. यहाँ पर देखिए आप, आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर कितना है? 16-bit है. तो योर डेटा हैज टू बी 16-bit. अब क्या होगा यहाँ पर? ये जो 16-bit डेटा है 0A9FH, H is hexadecimal. It means this data is hexadecimal data is going to be transferred to register AX. Okay, so why it is called immediate addressing? Because data which is to be used in the instruction is immediately given in the instruction itself. पहले जो था एग्जाम्पल जो था, ये इंस्ट्रक्शन में डेटा नहीं है, डेटा कहाँ पर है? रजिस्टर्स में है, इसलिए रजिस्टर एड्रेसिंग है. यहाँ पर डेटा कहाँ पर है? इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ हैविंग डेटा.
Okay, immediately after the mnemonics. This is mnemonics. MOV DL is mnemonics. Mnemonics में ही आपका data है, and that is why it is called as immediate addressing mode. Okay, let us go to next. I mean डायरेक्ट एड्रेसिंग. लेकिन डायरेक्ट एड्रेसिंग के पहले थोड़ा सा ये जो फिजिकल एड्रेस कैसे निकालते हैं उसका, हालांकि हमने ऑलरेडी बताया है तो आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेट मी रिवाइज इट अगेन. आपको पता होगा कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर इज हैविंग 20 एड्रेस लाइन. आप सभी को पता है, अभी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, राइट? जब 20 एड्रेस लाइंस है इसका मतलब क्या है? मेमोरी कैपेसिटी कितनी हो सकती? इस माइक्रोप्रोसेसर को जो हम अटैच करेंगे मेमोरी, उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती? 2 to the power 20. 2 to the power 20 मीन्स 1 मेगाबाइट, राइट? सो 1 मेगाबाइट 1 मेगाबाइट है. लेकिन हमारे पास जो रजिस्टर्स है, ये जो रजिस्टर्स मैंने बताया, AX, PX, CX, DX, SP, BP, ये मैक्सिमम डेटा कितना स्टोर कर सकते हैं? ओनली 16 बिट डेटा. ओनली 16 बिट डेटा. तो इसका मतलब क्या है कि हम 20, अब ये जो अब देखिए 1 मेगाबाइट मेमोरी है. पहले मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, उसका मेमोरी मैप निकाल के बताया था आपको. तो क्योंकि 20 बिट्स है, तो 20 बिट्स मतलब कितने हेक्स डिजिट होंगे? 5 हेक्स डिजिट होंगे, राइट? मतलब लेकिन हमारे पास रजिस्टर जो है 16 बिट मैक्सिमम है, ये 20 बिट कैसे कैरी करेंगे हम? दिस इज द प्रॉब्लम ना, कि अगर हमें, अब देखिए जैसे कि मान लो आपको, जैसे कि छोटा बच्चा है जो किंडरगार्टन में जाता है, ओके? अब जो किंडरगार्टन में जो बच्चा जाएगा उसको आप कहेंगे कि बेटा 1 लाख इक्वल टू 1,20,000 to 350 प्लस 2,30,260, ये अगर एडिशन उसको करने के लिए देंगे हम, तो ही इज गोइंग टू बी इन ट्रबल. लेकिन उसको हम कहेंगे 2 + 2, तो ही विल बी एबल टू डू दैट, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि हमारे वो जो बच्चा है, छोटा बच्चा, उसकी मेमोरी कैपेसिटी के ऊपर आप अगर कुछ उसको करने के लिए कहोगे, so it will be difficult for him to answer, or he is going to be scramble, right? So similarly here हमारे पास मेमोरी कितनी है मैक्सिमम, कितनी कनेक्ट कर सकते हैं हम? 2 to the power 21 में 1 मेगा, मतलब 20 लाइन चाहिए. अब 20 लाइन का अगर एड्रेस हमें कैरी करना है तो आपके पास 20 बिट रजिस्टर चाहिए, जो कि आपके पास है ही नहीं. 20 बिट रजिस्टर एक भी नहीं है 8086 माइक्रोप्रोसेसर में, मैक्सिमम 16 बिट रजिस्टर है. प्रॉब्लम है ना. तो इसीलिए हमने क्या किया फिर, उसके लिए हमने ऑप्शन भी सोचा है. ऑप्शन सोचा है 8086 माइक्रोप्रोसेसर के मैन्युफैक्चरर ने, जो मेमोरी जो है उसको सेगमेंटेशन किया जाए मेमोरी का, राइट? इसलिए 4 सेगमेंट किए गए: डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट. एंड ईच सेगमेंट को कितना कितना कैपेसिटी दिया गया? ओनली 64K. सो 64K अगर है तो इसका मतलब क्या है? हमें 2 to the power 16 मतलब 64K. इसका मतलब क्या होगा? हमें 16 बीट ही 16 लाइन लगेंगे वो मेमोरी को लोकेट करने के लिए, राइट? तो आवर जॉब इज गोइंग टू बी इजियर, क्योंकि हमारे पास 16 बिट रजिस्टर्स है, हमें मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए भी 16 लाइन चाहिए. सो आवर जॉब इज गोइंग टू बी इजियर, राइट? लेकिन ये तो हो गया लॉजिकल एड्रेस. लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में, क्योंकि हमने सेगमेंटेशन किया है 4 सेगमेंटेशन, इस सेगमेंट का 64K है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में तो हमारा एड्रेस जो है, फिजिकल मेमोरी लोकेशन जो है, वो तो 20 बिट का है. तो इसीलिए हमें कुछ तरीका ढूंढना चाहिए, राइट? हालांकि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा. ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है. कन्वर्जन ऑफ लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है. ये बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर अंदर के अंदर करता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसीलिए आपको बताना जरूरी है. Therefore, इसके लिए हम क्या करते हैं? ये लॉजिकल एड्रेस जो है हमारा होता है, उसको हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, उसको ऑफसेट एड्रेस भी कहते हैं. उसको हम किस इसमें रखते हैं? वो रहेगा आइदर इन IP, SI, DI, BP और SP. These are the pointer register, index registers. Okay, यहाँ पर हमारा लॉजिकल एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस अलग अलग देखिए, टर्मिनोलॉजी अलग अलग है. इसको हम लॉजिकल एड्रेस कह सकते हैं, इफेक्टिव एड्रेस कह सकते हैं और ऑफसेट एड्रेस कह सकते हैं. कौन होल्ड करता है? SI, DI, BP एंड SP. एंड जो बेस एड्रेस जो होता है हमारा, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी होल्ड बाय